everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems. चलो कुछ questions करते हैं thermodynamics से. So in this video, I'm going to do two questions basically, and there is something that will help you understand the concept of thermodynamics a bit more, or maybe this is just a revision thing for you. So let's start. An ideal gas expands according to the relation, this one. So ideal gas is expanding basically, and the relation that it is following for this case is Pt square is equal to constant. Let's say it is K. The coefficient of volume expansion of the gas is. सो वॉल्यूम एक्सपेंशन आप लिखते कैसे हो? जैसे देखो v को आप क्या लिखते हो? v को लिखोगे ना v नॉट 1 प्लस अल्फा v डेल्टा t, where alpha v is the coefficient of volume expansion, right? So v is the volume at any temperature t, and v naught is the volume at any reference temperature t naught, right? And delta t is basically t minus t naught. Done it? So if you have to talk about alpha v, what do you have to talk about actually? So v minus v naught कर लो आप, v minus v naught equal to क्या हो जाएगा? v naught alpha v delta t. So v minus v naught is delta v. So delta v by v naught delta t will be equal to alpha v. So if we have to calculate alpha v, we have to actually find out this one, delta v by v naught delta t. And here the relation that it is that is given in this case is Pt square equal to constant. So we need to replace this pressure because there is no pressure variable, or you can say that pressure term in this alpha v thing, right? So we need to replace it. और तुम्हें पता हो कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, अगर वो आइडियल गैस है तो एक इक्वेशन तो वो डेफिनेटली फॉलो करेगा जिसको आप क्या बोलते हो? आइडियल गैस इक्वेशन, PV equal to nRT. This is true for all the processes, adiabatic, isothermal, कोई भी प्रोसेस हो, पॉलीट्रॉपिक. जैसे यहाँ पे ये प्रोसेस एक यूनिक प्रोसेस है, बट इस यूनिक प्रोसेस में भी PV इक्वल टू nRT ट्रू होल्ड होगा, राइट? सो ये हमें यूज करना है, ये कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड. And it is required here because we need to replace P with volume and temperature thing. So P को यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बताओ? यहाँ से लिख सकते हो P को nRT by V. So P को आप लिख लो nRT by V, and this is T square is equal to constant. So what you are getting, V minus 1 T का cube is equal to some other constant, right? Because N is a constant, number of mole that is present in this case of the gas, and R is gas constant, right? So this is constant now. अब देखो हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में एक इक्वेशन मिला है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा वी. डू वन थिंग, जब भी थर्मोडायनेमिक्स में ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है मोस्ट ऑफन. ऐसे भी तुमने उसका आई मीन उस चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशन किए होंगे विद द हेल्प ऑफ दैट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो लेट्स डील विद इट हियर. इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो. कैसे करोगे? पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लो. तो चलो मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट लेती हूँ v माइनस 1. देन टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में. सो दिस विल बिकम 3T स्क्वायर एंड देन डेल्टा टी. डन है? बिकॉज आई मीन यू आर डूइंग d ऑफ v माइनस 1 tq dt and then into dt. Partial differentiation will look like this one. Okay, so it is this. इसलिए मैंने dt लिखा है फिर से. Plus I mean two things are in multiplication, so you are differentiating basically. So differentiate करोगे तो पहले एक वेरिएबल को करोगे, then you will differentiate the another variable, and this time you will be treating this tq as the constant, and you will be differentiating v minus 1 with respect to volume. So dv minus 1 by dv क्या हो जाएगा? minus 1 by v square. So partial differentiation is minus 1 by v square dv. Okay, so this is equal to 0. Now you just need to arrange this thing. So this is 3t square delta t by v. So this is 3t square delta t by v, and this is equal to how much? आप यहाँ से देख लो. This is equal to, this is negative term, right? So plus हो जाएगा जब आप इसको इधर लेकर जाओगे. So this is tq dv by v square. So this is tq dv by v square. So v से एक v cancel हो जाएगा. So only v is left here. T square से t square will get cancelled. 1 will be remaining here. So t1, and what we have to calculate actually, अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा v क्या था? डेल्टा v by v naught delta t. So where is the delta v? This is delta v, right? So delta v by v, this is volume, right? So delta v by v delta t is equal to how much? This is equal to 3. Okay,
Okay, let us look for this. 3, uh, nothing else is there, right? So this is equal to how much? 3 by T basically. Then delta V by V delta T. And delta V by V delta T is alpha V basically. So this is your expression, right? So 3 by T is what? This is your alpha V thing. Done it? So which one will be correct answer? 3 by T. C is the correct answer. Done it? So इस तरह से आप solve कर सकते थे. इसमें simply you needed to check what is alpha V and then how you can reach to that expression. So basically you need equation for this system of gas expanding in terms of temperature and volume. P T square के टर्म में दिया हुआ है, P को आप वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म में लिख लो. By using ideal gas equation you sort it, right? So this way we could have done it. Now let us move to the second question, and this is a bit interesting, I'd say. Let us first read the question carefully. An adiabatic cylindrical chamber with a frictionless movable piston has been placed on a smooth horizontal surface as shown. So this surface is smooth. Okay? There is no friction in here. And this is adiabatic wall actually. I mean no heat transfer will occur. So Q is equal to 0 here. Done hai? 1 mole of an ideal monatomic gas is enclosed inside the chamber. So kya notable point hai? Monatomic gas it is, and it is 1 mole. Okay. So this is this, and this is inside the chamber. Mass of the piston is m. So mass of this thing is m, and mass of the remaining chamber, including the gas, is 4m. So mass of this chamber, including this gas, is equal to how much? It is 4m. The gas is at atmospheric pressure and temperature. So initially ये क्या है तुम्हारा? Pressure inside and temperature inside is equal to pressure outside and temperature outside. क्योंकि देखो ये system I mean rest में है, ठीक है? This piston is in rest. So whatever pressure is inside gas is exerting on the piston will be the pressure getting exerted by atmosphere on the outer wall of the piston. अगर ऐसा नहीं होगा तो ये piston move कर जाएगा, right? So this pressure has to be balanced. It means atmospheric pressure पर है, ठीक है? So it is like this. Now what is happening? A particle of mass m moving horizontally with a speed v. Now this is particle of mass m, and this piston also has mass m. Okay, and it is striking which one? It is striking the piston, and it strikes it elastically. So elastic collision is going to occur. Find the change in temperature of the gas when the compression is maximum. So what will be the change in temperature happening here when the compression will be maximum? So actually we need to analyze this situation. इसको हमें read करना है कि होगा क्या यहाँ पे. तो चलो सबसे पहले हम इसको closely देखते हैं. आप देखो यहाँ पे m mass है, it is colliding with piston. Piston also has a mass m. So collision is happening between two masses m, and both has I mean elastic collision between equal masses. आपने पढ़ा होगा कि जब collision elastic होता है and if colliding bodies are having same mass, then their velocities will get exchanged after the collision. So before collision, this is moving with v, this is 0. So after collision, this will share this one's velocity and this will share this one's velocity. So this particle will come to rest after collision and this piston will start moving with velocity v. So in collision, I mean, I have dealt with so many questions on this thing and I have time and again told you that this is very important thing you should keep in your mind. जब भी आपको दिखता है दो मास है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, don't go into equation, simply put it in your head that after collision they will simply exchange their velocities. So यहाँ पे जैसे ही ये टकराएगा, this piston will get a velocity v in this direction. Okay. अब देखो इसके पास वेलोसिटी आ गया v. इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से it will start moving in this direction and hence chamber volume will start decreasing. That is gas will start getting compressed. क्योंकि अब गैस के पास घूमने के लिए कम जगह है. So it will more vigorously collide with the wall and in that case more pressure will get exerted, right? So pressure कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है. बट सिंपली सिर्फ ये नहीं होगा क्योंकि आप देखो हमें जो चैम्बर का मास दिया है ना, दिस इज कंपेरेबल विद द मास ऑफ पिस्टन एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस. सो इसके चलने की वजह से जैसे धीरे धीरे ये चलेगा, इस पे गैस का प्रेशर बढ़ेगा. व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू आई मीन इट विल रिटार्ड दिस पिस्टन. डन है. सो पिस्टन की वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी. अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो, हमारे पास अब आई मीन सिस्टम क्या है? पिस्टन प्लस चैम्बर प्लस गैस. ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक सिस्टम.
तो जो सिस्टम प्रेशर लगा, जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द पिस्टन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग वॉल्यूम, डन है, दैट प्रेशर, and because of that pressure there will be force, and this force will become one internal thing, right? So अगर आपने इसको सिस्टम माना है, जो भी फोर्स लग रहा है पिस्टन पे वो एक्सटर्नल नहीं इंटरनल है, and because of internal force acting momentum of system will stay constant. What is the meaning of this one? देखो, अगर आप आई मीन यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही ये कोलाइड किया, पिस्टन के पास कितना मोमेंटम है, mv, and finally also at any moment of time momentum of this system, piston plus chamber plus gas, we will call it equal to mv, right? So at maximum compression what will occur, एक simple सा केस इमेजिन कर लो जहां पे ये चैम्बर बहुत हेवी है, बहुत हेवी है, let's say, and in that case it is moving with velocity v. So maximum compression कब तक होगा, जब तक ये piston रेस्ट में ना आ जाए, right? क्योंकि it will keep on moving in this direction, and as it will move towards right more and more, pressure ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगा, एक टाइम पे ये इनफ रिटार्ड होकर रेस्ट में आ जाएगा, and at that point of time we will say that I mean maximum compression has been achieved. ठीक है, सो वो मैक्सिमम compression का केस होगा, बट यहाँ पे this is not heavy, that much heavy, it has, I mean it can move, right, for him. So what will happen, in the position where there will be maximum compression, in that case velocity of this piston with respect to chamber will be zero, डन है, चैम्बर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है? सो लेट अस टॉक अबाउट दिस वन, लेट्स से velocity of piston with respect to chamber will become zero. In that case you will get the maximum compression, that is vp minus vc is equal to zero, that is velocity of piston will be equal to velocity of chamber. So finally, at the point when maximum compression will occur, this whole system will share the equal velocity, we can say. डन है, सो होल सिस्टम का मास क्या है, इसका 4m, इसका m, सो होल सिस्टम का मास है 5m, सो वेलोसिटी लेट्स से v नॉट, so v naught value will be how much, it will be v by 5. So at the point when there will be maximum compression, what will be the case will be this thing as a whole is moving forward with speed v by 5, डन है, सो ये केस है। चलो अब हम क्या निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है? सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली एनर्जी कितनी थी, द मोमेंट दिस पिस्टन स्टार्टेड मूविंग एनर्जी वाज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और अभी एनर्जी कितना है एट द स्टेट ऑफ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, हाफ एम, एम इज हाउ मच 5m, वी कितना है तुम्हारा v by 5, so v square by 25, so this is equal to how much, this is equal to v square by 10, right, mv square by 10. So energy has decreased, ये energy गया कहाँ, डन है, सो एक्चुअली ये तुम्हारा वर्क डन में गया है, डन है, बिकॉज गैस हैज डन वर्क, राइट? सो ये वर्क डन में गया, एंड वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस कैन बी रिटन एज व्हाट, वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लो आप, सिंपली Q इज इक्वल टू क्या लिखते हो, डेल्टा U प्लस वर्क डन, Q इज जीरो, एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा U प्लस W, और डेल्टा U इन एवरी प्रोसेस, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू NCV डेल्टा T, done it. So here also it will be NCV delta T. Let us put it and get the answer. So basically change in energy will be equal to how much work getting done, क्योंकि देखो ये सिस्टम ने काम किया है तो वो अपनी एनर्जी को यूज किया है काम करने के लिए, तो कुछ एनर्जी वो खा गया क्योंकि इट हैज डन वर्क, अगर तुम काम करोगे तुम्हारी एनर्जी घटेगी, सेम थिंग हैज हैपेंड ओवर हियर, ओके? सो हाउ मच एनर्जी इट हैज ईटन, एंड दैट इज इक्वल टू mv square by 2 minus mv square by this is 10. Loss in energy can be written to be equal to work done, and that is NCV delta T. N क्या होगा तुम्हारा, N will be equal to 1 mole, that is given in the question, CV 3 by 2R because this is a monoatomic gas, and delta T, ठीक है? Now you just do this, 5 से multiply कर लो 5, so this will become how much, this will become 4 mv square by 10 and equal to 3 by 2R delta T. So 2 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स से, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 mv स्क्वायर by 5 is equal to how much, r delta t, 3r delta t, I guess, right? This is your 3r delta t, yes. So delta t is equal to how much, this is 4 mv square by 15 r, okay? This is going to be your answer.
So I hope you have understood both the question, but if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.